Hello everyone, let's start the next topic of the AWS Solution Architect exam prep series. AWS Identity and Access Management Chapter 6, where we define who can do what and how AWS proves it. So let's start. What is AWS IAM? The gatekeeper for the every single AWS resource you own. जो भी हम AWS रिसोर्सेज ओन करते हैं उनका गेटकीपर लाइक कौन से एक्सेस और कौन से रूल हमें असाइन है, कौन से एक्सेस हम ले सकते हैं. So IAM secure and manages the AWS resources in your account for controlling who can interact with them and how. So जस्ट एक एग्जांपल कि हमें किसी बिल्डिंग में जाना है और सिक्योरिटी डेस्क पे पहले आपका आईडी कार्ड चेक होगा, दैट इज द ऑथेंटिकेशन. एंड देन आपकी लिस्ट चेक होगी कौन से फ्लोर कौन से रूम का एक्सेस है आपको. ठीक है, तो दैट विल बी द ऑथराइजेशन एवरी सिंगल टाइम व्हेन एवर यू आर एंट्री. So similarly, you can interact with AWS through the principal. They can be people or application. IAM policies are written to specify the access privilege of the principal. They having some access privilege. Each principal is authenticated. हर एक principal authenticated होता है, proving who they are and deciding what they can do. Like पहले हम authenticate करेंगे, then authorization देंगे. IAM is a powerful enough to resolve a multiple possible conflicting IAM permissions. So you can further secure access with multi-factor authentication and delegate a permission further through federation. So similarly, IAM is a control the same way as other AWS services and the management console, the CLI, or the directly via the AWS SDKs. So IAM क्या है? It decide who you are and how, what you can do. Authorization and authentication. Principle the way, three ways to be someone in the AWS, like as a principle that I am entity allowed to interact with your AWS resources. कुछ रूट यूजर्स होते हैं, कुछ IAM यूजर्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं, टेम्परेरी टोकन्स होते हैं. सो रूट यूजर्स कौन से होते हैं? द सिंगल एंड द पावरफुल साइन इन प्रिंसिपल. किसने साइन इन किया है? जो ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइज पर्सन है, जिसने पहली बार रूट यूजर का मतलब जो रूट यूजर है जिसने भी क्रिएट किया है. ठीक है, यू गेट द मोमेंट यू क्रिएट अ AWS अकाउंट और कंप्लीट एवरीथिंग यू ऑलवेज रूट यूजर जिसने स्टार्टिंग की है. ठीक है, और IAM यूजर क्या है? persistent identity set up through the IAM to represent the individual peoples or the application they exist until the administrator deletes them. ठीक है, persistent identities होती है IAM की. ठीक है, जिसमें पीपल्स और एप्लीकेशंस को हम एक्सेस देते हैं और वो तब तक रहते हैं जब तक एडमिनिस्ट्रेटर उनको अलाउ करता है. ठीक है, रूल्स एंड टेम्परेरी टोकन्स क्या होते हैं? ग्रांट स्पेसिफिक प्रिविलेज टू स्पेसिफिक एक्टर्स फॉर अ सेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. 15 मिनट से 36 आवर्स तक ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाना है कि स्पेसिफिक प्रिविलेज ऑफ एक्सेस देना किसी को, कुछ रूल्स देना एक स्पेसिफिक टाइम के लिए. वो रूल्स और टेम्परेरी टोकन्स होते हैं. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स कैन बी परमानेंट, रूट यूजर, IAM यूजर्स, और temporary should be a roles are temporary and are represent a human or an application. ये represent करते हैं कि humans कैसे application कौन क्या कर सकता है. The root user, the account master key, powerful and dangerous to use daily. When you create a AWS account, you begin with a single sign-in principal that has complete access to all AWS cloud service and resources in the account, the root user. जिसके पास सारे एक्सेस होते हैं, सिंगल साइन इन प्रिंसिपल होता है AWS का,
एंड अकाउंट सर्विसेज वो रूट यूजर्स होते हैं. एज लॉन्ग एज यू ओपन द अकाउंट रूट यूजर विल बी देयर. ओके. रूट यूजर है, रूट यूजर्स ने लॉगिन किया है, वही सारे एक्सेस कर सकता है. एक समथिंग आ मास्टर जो जिसके पास सारे एक्सेस हैं. सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक्स रूट विंडो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, it has a full privilege to do anything in account including closing the account. So the master key is in the entire building. It opens a door including one that demolishes the building. You lock it in a safe and use a regular labeled key and I am user for daily entry instead. So best practice ये है, do not use the root user for the every task. This is very important that every admin wants to create first IAM user and then securely lock away the root user credential. हम root user credentials को lock कर देते हैं और हम IAM user create करके IAM user के through services create करते हैं और उस पर work करते हैं. ठीक है. तो root user privileges cannot be limited by a policy. This is a guaranteed exam fact which will genuinely ask what will be the primary or best practice for using IAM. This type of question will come in exam. IAM user क्या होते हैं? IAM user होते हैं persistent identities for the people and the apps on your team. That the user are persistent identities that set up through the IAM service. IAM service के जो हम उसको setup करते हैं और represent करते हैं कि individuals people है और applications के लिए है. तो so you can create a separate IAM user for every each member of your operation team so they can interact with the console and use the CLI. So you might also create a dev, test, and production user for the application that you need to access AWS cloud services. So IAM user can be created by principal with the IAM administrator privilege at any time through the management console CLI, and user are the permanent entities that exist until the IAM administrators take the actions to delete them. There is a no एक्सपायरेशन पीरियड. एक्सपायर होने का कोई पीरियड नहीं होता है. जब तक एडमिनिस्ट्रेटर डिलीट नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर यूजर को तब तक हम वो यूजर डिलीट नहीं होता है. वो परसिस्ट रहता है, कांस्टेंट रहता है, हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है. ठीक है. Users are excellent way to enforce the principle of the least privilege, letting a person or the process do exactly the task they need and nothing else. Okay. Rules and temporary security tokens. Confusing at first that but essential and advanced and secure IAM यूजर. जब एडवांस लेवल पे IAM को यूज करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम रूल्स और टेम्परेरी सिक्योरिटी टोकन्स के बारे में पता हो क्या होते हैं वो. So rules grant a specific privilege to the specific actors for the set of duration of time. These actors can be authenticated by AWS or by some trusted external system. So when an actor assumes a role, AWS provide a temporary security token from a AWS security token service. Requesting a temporary security token requires specifying how long the token will exist. Before it expires, the range of the temporary security token and lifetime is 15 minutes to 36 hours. The visitor day passed by a corporate office, it issued fresh for a specific purpose, self-destructs automatically after a set number of hours and never need to be manually collected back at the end of the day. So, three use cases of the roles and token is Amazon EC2 roles, cross account access, and federation. So, roles are pre-packaged and set of permission that have no credentials of their own. Credentials only appears once a principal actually assumes the role. Easy that the roles are specific privilege है जो हम एक particular duration of time के लिए देते हैं. ठीक है. अब आते हैं Amazon EC2 रोल्स. EC2 रोल्स में कैसे रोल्स हम प्रोवाइड करते हैं, कैसे कोई इंस्टांस
में हम ये रूल्स प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर यूजर्स को. सो बेसिकली the clean way to give an application AWS access, no stored credential. क्लीन वे ये होता है कि हम कोई भी क्रेडेंशियल स्टोर नहीं करते हैं. ठीक है. सो EC2 इंस्टांस में जब IAM रूल्स नहीं थे तो EC2 इंस्टांस में क्या प्रॉब्लम थी. देन एप्लीकेशन EC2 इंस्टांस needed S3 access could use the IAM user access key. IAM यूजर की एक्सेस की यूज कर सकता है, बट that the key must store the somewhere accessible to the app or often in a configuration file. This makes the key a secret risk, and rotating it later means repeating the whole complicated process again. So with the help of rules, हमने क्या किया, IAM rules grant किया required S3 access and assign the instance at launch. Launch पे हमने S3 launch पे assign किया. So with the help of this app called the S3 API, it assumes an instance roles and obtain a temporary token automatically and handled by most AWS SDK. So no access key ever needs to be stored and there is a no fixed key to rotate. Okay. फिर हमें कुछ भी रोटेशन नहीं करना पड़ता है और हमारी सिक्योरिटी मेंटेन हो जाती है with the help of this. So using a IAM role for AWS EC2 instance, remove the need to store AWS credential in the configuration file entirely. हमें अपनी configuration AWS credential में configuration file को store करने से avoid करता है EC2 rules. Okay. So instead of just think like that, instead of writing your house keys location on a sticky note taped to your app, storing a static key, you give the app a beige reader to use a brand new short-lived pass every time it needs to enter temporary token via STS. क्रॉस अकाउंट एक्सेस एंड फेडरेशंस क्या होते हैं. Extending a trust outside your account and outside the AWS together. हम अपने अकाउंट को AWS के आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास क्रॉस अकाउंट एक्सेस एंड फेडरेशन है. क्रॉस अकाउंट एक्सेस क्या होते हैं, ये एक्सेस ग्रांट करते हैं AWS रिसोर्सेज को through the IAM user or to the other AWS accounts, whether you can control those accounts or not. So set up a IAM role with the permission you want to grant to user in the other account. The user can then assume that role, and this is the highly recommended as a best practice. Then instead of distributing the access keys outside your organization. ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हमें अपनी एक्सेस की नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए. दिस इज द हाईली रिकमेंडेड एंड द बेस्ट प्रैक्टिस. सो हमें हमेशा अपने क्रेडेंशियल्स को प्राइवेट रखने पड़ते हैं, कभी हमें पब्लिक को किसी से शेयर नहीं करना होता है. सो फेडरेशंस क्या है, आई एम आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स लेट यू द फेडरेट द आउटसाइड एंटिटीज and assign a privilege to the user authenticated outside of IAM. Web identities like Facebook, Google, login with the Amazon supported via OpenID Connect. ठीक है. एक्सटर्नल आइडेंटिटीज क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी, LDPAT सपोर्टेड वाया सिक्योरिटी एजेंट मार्कअप लैंग्वेज 2.0. Okay. So in every federation case, authenticated identity from the IDP map to a role and the temporary token is written for the assumed role. लेट्स कम कि AWS प्रिंसिपल्स के क्या ट्रेड्स हैं हमारे पास. ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. सबसे पहला प्रिंसिपल है रूट यूजर का. इट कैन नॉट बी लिमिटेड एंड परमानेंट. ओके. लिमिटेड नहीं है, रूट यूजर्स हमारे लिमिटेड नहीं है, परमानेंट है. ठीक है. IAM यूजर्स क्या होते हैं, एक्सेस कंट्रोल बाय पॉलिसीज, ड्यूरेबल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय IAM एडमिनिस्ट्रेटर. जो IAM यूजर्स होते हैं वो ड्यूरेबल्स होते हैं और कैन बी रिमूव्ड बाय IAM एडमिनिस्ट्रेटर. वो रूल्स IAM एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं.
removes roles, temporary security tokens, access controlled by policy, temporary or expiry after a specific time interval. So जो टेम्परेरी रोल्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होते हैं, इट्स डिपेंड. ओके. So the one exception, root user privilege cannot be limited at the policy, not even by explicit deny. Every other principal I am user role can always be restricted by a attached policy. Let's see the authentication, proving who you are. Authentication क्या होता है? आप कौन हो? Authenticate करो. ठीक है, आप इस पर्टिकुलर AWS अकाउंट के रूट यूजर हो, पर्टिकुलर इसके IAM यूजर हो, या रोल क्या है. सो ऑथेंटिकेशन, प्रूविंग दैट हु यू आर, यूजर नेम, पासवर्ड, एक्सेस की एंड सेशन टोकन डिफाइंस. ये सारे हेल्प करते हैं आपको डिफाइन करने में, ऑथेंटिकेशन डिफाइन करने में. ठीक है. तो when the principal represents a human interacting with the console, you provide a username password pair to verify the identity. IAM lets you enforce a password policy for complexity and expiration. Access की क्या होती है? The combination of the access key ID and the access secret key for the 40 characters it will be. So used by a program to signing the underlying REST calls to AWS services via API. ठीक है. एक्सेस कीज हमारी कॉम्बिनेशन होती हैं सीक्रेट की और प्रोग्राम की. सो Access key and session token क्या होते हैं? When a process operates under the assumed role and the temporary security token provide a access key plus a session token, and calls to AWS must include all three parts or to authenticate. वो तीनों parts को authenticate करते हैं. So when the IAM user is first created, it has neither an access key nor a password. The IAM administrator sets up the either or both, adding an extra layer of security. ठीक है, या तो हम एक अप्लाई करते हैं या फिर बोथ अप्लाई करते हैं. इट हेल्प्स फॉर द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी. Authorization policies क्या होती हैं? So basically a policy is a JSON document that defines exactly what a principal can do. ठीक है, ये डिफाइन करता है कि प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं. आफ्टर द ऑथेंटिकेट प्रिंसिपल, it must then manage what the principal can actually access. This process is actually authorization. Authorization handled in IAM by defining the specific privilege in policies and associated those policies with the principal. A policy fully define a permission and permission understanding how access management works start with understanding a policy document. ठीक है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर को अंडरस्टैंड करने के बाद हम कैसे IAM ऑथेंटिकेट करता है ऑथराइजेशंस को एंड व्हाट द रूल और प्रिंसिपल दे हैव. ठीक है. Just take example, the permission slip written in a simple specific format, who can get to do what and to which exact item and whether the yes or no, no vague permission slips allowed, every field must be spelled out. जस्ट एक एग्जाम्पल कि एवरी पॉलिसी के पास अपनी की स्टेटमेंट होती है, रूल्स होते हैं. सो इस स्टेटमेंट पे हम इफेक्ट, सर्विस, रिसोर्स, एक्शन डिफाइन करते हैं. सो इफेक्ट क्या होता है? ए सिंगल वर्ड अलाउ और डिनाई sorry deny. So it defines that we are denying or allowing this permission to the user or not. सर्विस क्या करते हैं? सर्विस फॉर व्हाट सर्विस डज द परमिशन अप्लाई? किस सर्विस को परमिशन अप्लाई कर रहे हैं? जैसे कि हम IAM पे अप्लाई कर रहे हैं, हम EC2 इंस्टांस पे अप्लाई कर रहे हैं, हम SNS पे अप्लाई कर रहे हैं. सो सर्विस वो हेल्प देता है, करता है. रिसोर्स क्या करते हैं? स्पेसिफाई AWS इंफ्रास्ट्रक्चर दैट परमिशन अप्लाइज टू स्पेसिफाई द Amazon रिसोर्सेज नेम प्रोवाइड करता है. एक्शन क्या है? द सबसेट ऑफ द actions, the permission allow or deny the set of action you can wildcard or just like read, write,
क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं हम रीड और राइट के, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। So policies cannot a fully specified permission or set of permission. A multiple permission can be specified with the enumerated list and using a wildcard. Policies को हम fully specify permission और set of permissions में रखते हैं, जैसे multiple permissions हैं specify किया एक enumerated list और wildcard में। Policies ये होती हैं। The ARN format. Amazon ARN format is Amazon resource name, the universal address of any AWS service. किसी भी AWS सर्विस का एक अपना यूनिवर्सल नेम। ठीक है, जैसे द ये ब्रैकेट में हम दिखा रहे हैं ना, रिसोर्स टाइप सेक्शन वेरी स्लाइटली बिटवीन द डिफरेंट AWS सर्विसेज। तो ये रिसोर्स टाइप हर बार चेंज होता रहता है। जैसे अगर हमारा Amazon S3 बकेट है तो हमारी रिसोर्सेज की चेंज होगी, IAM यूजर है उसकी रिसोर्सेज चेंज होंगी, डायनामो डीबी टेबल है उसकी रिसोर्सेज चेंज होंगी। तो वाइल्ड कार्ड वर्क हेयर टू, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड माय बकेट द ट्रेलिंग इज वेरी कॉमन। ओके। Policy condition, a worked example, optional, additional restrictions layered on top of a permission। ये पॉलिसी डिफाइन करते हैं, रीडिंग दिस पॉलिसी अलाउ दिस पॉलिसी ग्रांट एक्सेस। एक्सेस क्या, एक्शंस क्या है, रीड राइट गेट पुट। रिसोर्स क्या है, ओनली पब्लिक रिसोर्स प्राइवेट रिसोर्स लाइक बकेट। एंड कंडीशन लाइक ओनली फ्रॉम सोर्स IP or destination IP. The condition only optional defines one or more additional restrictions on the permission. IP address ranges and the time intervals are a common example. Conditions vary by service. Conditions जो है वेरी करती हैं सर्विसेज के अकॉर्डिंग। AWS documentation list the rich set of supported condition you can apply for each one. That's easy. Associating policies with principal, two way to attach a policy, user policy और managed policy। यूजर पॉलिसी क्या होती है कि वो पॉलिसी ऐसी जो एग्जिस्टिंग ओनली कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई एम यूजर के कॉन्टेक्स्ट पे जो है क्या बोलते हैं एग्जिस्ट कर रही हो। इन कंसोल यूजर पॉलिसी इज एंटर्ड इनटू द यूजर डिफाइंड ऑन IAM यूजर पेज। सो दिस इज अ मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर सिंपल एंड वन ऑफ केस। मैनेज पॉलिसीज क्या होती हैं, ऐसी पॉलिसीज इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं जो IAM पेज पे थ्रू दी CLI, and also same policy can be associated with many user, a group of user। ठीक है। so there are the predefined management policies like AWS providers, so you can write your own policy। so why the managed policy win at scale? Using a predefined managed policy ensure that when a new permission are added for a new feature, ठीक है, your user will have a correct access automatically, and you review what policy a group of users having, reviewing the policy tab, no need to check every individual user। आपको हर एक यूजर को चेक नहीं करना पड़ता है, ये खुद हमें एक रिव्यू ऑफ यूजर्स की पॉलिसी दिखा देते हैं कि यूजर को किस किस चीज की परमिशन है। Groups managing permissions at scale. So stop assigning a policies one user at a time. So group simplifies to managing a permission for the large number of user by associating a policies to a group. So any member of the group assumes those permission. After the policy is assigned to the group, all users who are member of that group will still have a correct access even a member's changed. So this makes it simpler to assign a policies to the entire team in your organization. For the instance, create an operation group with a very needed permission assigned to it. So the new IAM user can then assign the group and all the team IAM user will assume those permission। IAM groups, user groups, हम ये आगे अब पढ़ चुके हैं IAMs में। So these are coming। New users can add it to the group and all the needed permission to the groups are entered once the user interface on the IAM group page।
Okay. User predefined the manage policies with the group to ensure new user and the group always have a correct access, even as your IAM policies evolve over time. Like we can think like that कि department wide key card program है. Instead of cutting the individual keys for every new hire, we can add someone operation department badge group, and they can instantly get every door that department already has access. ठीक है, जिस डिपार्टमेंट को ऑलरेडी एक्सेस है. सो हमने परमिशन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग परमिशन दे दी. सो मैनेजिंग परमिशंस एट स्केल लेवल. ठीक है, स्टॉप असाइनिंग अ पॉलिसी टू वन यूजर एट अ टाइम. एक बार में एक यूजर को पॉलिसी दे रहे हैं, तो ऐसे अगर हमें मल्टीपल यूजर्स हैं हमारे पास और हमें उनको परमिशन अलाउ करनी है, जैसे एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट में हमारे पास हमें आईएम यूजर है और हमें सबको एस3 की परमिशन देनी है अपने सारे डेवलपर्स को, तो हम एक एक डेवलपर्स को नहीं देंगे, हम ग्रुप्स में भी दे सकते हैं परमिशन. सिमिलरली लेट्स सी द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम से ही है कि मल्टी टाइम्स ऑथेंटिकेट करना. समटाइम लाइक समथिंग यू नो प्लस समथिंग यू हैव. Okay, like MFA adds an extra layer of security to your infrastructure by adding a second method of the authentication beyond just a password or access key. With MFA, authentication also requires to entering a one-time password from a small hardware device you carry with you, a virtual device via an app like AWS Virtual MFA app. MFA can be assigned to the any IAM user or the root account when a person using IAM user account attempts to access the AWS management console. After providing their password, they will prompted to enter the current code displayed on their MFA device before being granted access. So जस्ट एग्जाम्पल कि कोई एटीएम है, योर पिन इज समथिंग यू नो, आपको पिन पता है. ठीक है, एंड योर फिजिकल डेबिट कार्ड इज समथिंग यू हैव, फिजिकल डेबिट कार्ड है आपके पास. द थीफ ओनली विल ओनली लाइक with only your pin and only your card still can't withdraw your money because MFA requires both at once, exactly like your password plus your device, your plus your pin plus debit card similarly on the same time. So enable a MFA on the root user first, the single most powerful, most dangerous credentials in your entire AWS account. So हमें मल्टी फैक्टर इनेबल करना चाहिए जब भी, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, so that we are more secure to our AWS account. Assuming a role, the process, how an actor pick up the temporary identity. एक्टर एक टेम्परेरी आइडेंटिटी कैसे पिकअप करता है कोई टेम्परेरी रूल्स या प्रोसेस के लिए. सो लाइक आफ्टर just getting started a one time setup, the root user had created a new IAM group that is called administrator. Assign it the managed policy IAM full access. Assign कर दिया आपने policy. Create a first IAM user and add it to a group. First IAM user create किया आपने फिर group में add कर दिया. At the point you can log off as the root user. Root user की तरह आपने log off किया and the further administration can be done with the IAM user root. अब आगे से हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सेस हैं वो हम IAM यूजर रूट से कर सकते हैं, बिकॉज हमने IAM फुल एक्सेस की पॉलिसी प्रोवाइड की है अपने उस IAM यूजर को, एडमिन यूजर को. सो an actor can be associated with the role by the authenticator. IAM user, person or process is the case must have a right to assume the role. A person and the process authenticated by a trusted service or outside of the AWS, such as an on-premises LDAP directory or web authentication service. So after assuming the role, the actor has a right of that role. A temporary security token is provided with a temporary access key plus an additional session token
required for the authenticating API calls under the assumed role. So the token contains all the information associated with that role, and it is provided with the temporary access key required for authenticated API calls under a assumed role. So a good first step to any new account is to create IAM administrator group with the IAM full access policy, and then work exclusively as an IAM user, resolving a multiple permission. When policies disagree, one simple rule always wins, that is deny. Why? See, like 5 step evaluation order is there. Initially, the request is denied by default. All the appropriate policies are evaluated. Permissions can come from the multiple policies attached to the AWS resources in questions. So, if no explicit deny is found and explicit allow is found in any policy, the request is allowed. So, if there is a no explicit allow or deny permission you found, then the default deny is automated and the request is denied. So if there is an explicit deny found in any policy, that stops all evaluation and the request is denied. So the club with a two bouncer, just take example. If either a bouncer say no, you're not getting it, no matter how many other bouncers said yes. So one explicit deny beats the any other number of allows every single time. So the 5 basic step logic is deterministic and consistent to memorize the order and default deny, evaluate all policy, explicit deny always wins, otherwise explicit allow always wins. So it helps to resolving a multiple permission. Rotating keys. Rotating keys is important. And last topic. See, the security risk of any credentials increase with its age. The security risk of any credential increases with the age of that credential. To this end, it is a security best practice to rotate keys regularly. AWS allows two access key to a valid simultaneously for the same IAM user, which makes the rotation process straightforward. And this dual validity means that your application never has a moment of downtime while the swap happens. So the 5 step rotation process is create a new access key for the user, reacquire all the applications to use a new access key, disable the original access key, verify the operation of all application and delete the original access key. रोटेटिंग की का बेसिक काम है एक न्यू एक्सेस की क्रिएट करना, फिर रिकॉन्फ़िगर करना एप्लीकेशन पे, फिर उसके बाद डिसेबल करना ओरिजिनल एक्सेस कीज को, फिर वेरीफाई करना ऑपरेशन सारे एप्लीकेशन के, एंड देन डिलीट द ओरिजिनल एक्सेस की, फिर हम डिलीट कर सकते हैं. So the access key should be rotated on a regular schedule, and this is one of the most repeated best practice lines is asked in exam, that the access key having a rotated on regular schedule. So this is the exam cheat sheet we are having. Here you can just memorize the topics or main lines, so that whenever in exam you are having MCQ or you want to give the right answer, you can just memorize this. आप इसको याद रखो, then आप definitely उसको इनको इन चीज़ों की हेल्प से आप एक राइट आंसर चूज कर सकते हो एग्जाम में. So you can collect these cheat sheet from here. You can take a screenshot as well. Now chapter 6 is finished. Chapter 6 topic is finished. Principal authentication policies, rules, federation, MFA, key rotations is finished. So if you like this video, like, subscribe and comment I will provide this PDF in the comment. So
Thank you. Thank you, everyone. Have a nice day.